So hi guys, this Valentine season it's time for another big unboxing. So finally, I was planning to order it in maybe like in December, पर मैं जल्दी से इंडिया जा रहा था और इसकी डिलीवरी टाइम तब लेट था, so इस कारण I couldn't get it before going to India in December. But anyway, अब finally क्या बात है, इतना छोटा बॉक्स. And with this Mavic Mini, I have ordered memory card because मैंने Fly More पैक नहीं लिया because that was $500. मुझे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा क्योंकि मुझे केस की ज़रूरत नहीं है. I have already a case for Mavic Mini and other than that मुझे लगता है if you will use it like wisely, अगर आप इसका कोई सामान घुमाओगे नहीं, so you don't have to get the extra $100, you don't have to pay $100 more, or I think 20 to 30 minute flight time is decently enough for me. So let's try it out. मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में कभी भी ड्रोन नहीं उड़ाया, ना कभी हाथ में पकड़ा है. दिस इज गोना बी माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रहा था कि आई कैन फ्लाई द ड्रोन इन दिस बालकनी. दिस इज जस्ट सच अ ब्यूटीफुल व्यू. बट मेरे घर के आसपास देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सो इट इज़ नॉट अलाउड to fly drone in downtown area, so I'll have to go to a park or beach. मैं देखूँगा, अभी चेक करूँगा, रिसर्च करूँगा कहाँ पे allowed है in Atlanta, and then I'll go there. But first of all, finally, wow! So this is the remote controller and this is the drone. It is way too small than I expected. So this is my OnePlus 5 phone and this is the size of the drone. Mind blowing. And it comes with this remote controller. Yeah, so number one is screwdriver. Then some drone propellers with the attacher. These are 3 cables, one for USB Type-C, one for iPhone and one for micro USB. Yep. So this is actually the drone cable to iPhone cable. So okay, I have made it to Piedmont Park और पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, so I didn't get a chance before. Now finally I'll get a chance. और मुझे सबसे बुरी बात इसकी अब तक ये लगी, आई वॉच सम ऑफ द वीडियोस कि एक्स्ट्रा बैटरीज आर इम्पॉर्टेंट, पर देखते हैं मुझे 30 मिनट का टाइम फ्लाइंग टाइम मिलता है कि नहीं आज. लैंड करवा लिया, फर्स्ट लैंड सक्सेसफुल. तो मुझे भी पता नहीं था यहाँ पे कार्स और ट्रक्स भी अलाउड है. सम ट्रक वाज अबाउट टू क्रंच और क्रश माय ड्रोन इनटू पीसेस, तो बचा लिया कृषांगी ने. Okay, so now I'm currently going to return my drone. So हुआ ये कि I couldn't fly it after 20% बैटरी, तो वो लॉन्च ही नहीं हो रहा था at 20% बैटरी. मैंने 5-10 मिनट अपने पावर बैंक से चार्ज करने की कोशिश की, it barely crossed like 21%. ऑन करते तक फिर 20% हो गया. So that's why I think 3 batteries are important. So I'm going to return this drone and जैसे ही मुझे रिफंड मिलेगा I will order the $500 bundle which comes with 3 batteries. क्योंकि अगर मैं अलग से बैटरीज लेना चाहता हूँ it will be more expensive, so it is worth buying the extra $100 bundle. एंड इस पर मुझे कोई टैक्सेस नहीं पड़े क्योंकि जो पिछला ड्रोन था दैट वाज फॉर $435 आफ्टर टैक्सेस, बट ये मुझे पड़ा एग्जैक्ट $500 का. The main difference between the Fly More combo and the $400 only drone is that the Fly More combo has
drone propellers, drone case with 3 extra batteries with the fast charger. And not only this, the 3 extra batteries inside the case can also be treated as a power bank. So now we just got done with our research meeting and we are going to Naman and Shesh's place because यहाँ पे downtown में drone उड़ाना allowed नहीं है. अरे पीछे का इसको हटाया से. एक मिनट क्यों बात कर रहे हैं? हाँ. क्या है? डरना मत. डर तो नहीं लग रहा. हो गया भाई अपना धोखा बार मुझे नहीं देखने का शौक है. वो क्या एपिक शॉट है, मानते कि नहीं? अब इसको हो रहा अभी सारा बारिश आई, तूफान आया और तूफान से पता नहीं क्या लगा. हॉली हॉली अरे क्या हो रहा है? नीचे 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 ला नीचे आंदे नीचे आंदे आंदे नीचे आने दे नीचे आने दे नीचे आने दे अरे नीचे आने दे नीचे आने दे नीचे 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 आंदे आंदे आने दे नहीं नहीं नीचे 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 आके नहीं जा तो नीचे नीचे लैंड करवा दे. So it's a great package overall. It was a lot of fun to fly. मैंने पहली बार drone उड़ाया and it was so easy and even my friends Naman and Shwet they could fly it too. And I would recommend one thing कि आपको इसके साथ you should definitely buy DJI Care Refresh. That is only for $40. अगर आप मतलब वो नहीं खरीदते, let's say it crashes and if you want to give it for repair, then they will charge $65 an hour. अगर imagine करो वो 10 घंटे आपका ड्रोन रिपेयर के लिए रख लेते हैं and 10 घंटे स्पेंड करते हैं, then it will cost $650. That's more than the cost of this drone. So that's why DJI Care Refresh अगर आप $40 खर्चोगे, you can get 2 replacement अगर आप क्रैश कर देते हो, पानी में फेंक जाते हो. So that's definitely worth it and you can fly it carefully with your friends. You can give it to kids and so on. And one more problem that I found with this drone was during night इसके GPS signal weak हो जाते हैं. I can show you the night footage, but I couldn't fly it because when I was flying it during night, it didn't even land. It was trying to land and it crashed against the wall. तो अभी बच गया. But right now, if you're trying to fly it during night, then definitely fly it in an open area, ना कि balcony. So that's pretty much it. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. My favorite part of the drone is that it has a map in its controller which tells you if it is legal to fly the drone in that particular area or not, and that's the reason I could fly my drone in my balcony.